Assalamu alaikum everyone. The series of lectures we have started on literary movement is successfully moving ahead, and today we will try to discuss and dissect modernism as a literary movement and its overall impact on the development of world literature in general and English literature in particular. In the course of our lecture, we will try to talk at length on the major themes of modern writers, their characteristics of writing, and of course the big literary guns who are supposed to be modern writers. At the same time, we will try to understand first that what modernism really is, which is the major impetus behind this movement, and how it has transformed the literature in rapidly transforming and changing global circumstances, whether political, social, or economic. From the very start, it is important to understand that modernism is a period in literary history which started around the early 1900s and continued until the early 1940s. Modernism refers to a global movement in society and culture. The rise of capitalism, along with rapid industrialization, helped bring about the modernist literary movement. These authors used multiple narrators, non-linear plots, and introspection. Modernism is a break from the past and a concurrent search for new forms of expression. It is primarily characterized by optimism and convention in an era of industrialization, rapid social change, and advances in social sciences. The literary and artistic movement includes imagism, symbolism, and vorticism. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आप सबको जहन में बिठाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगी इस हवाले से, यह है कि 20वीं सदी का जो आगाज़ था, ख़ास तौर पर इसके जो पहले 50 साल थे, द फर्स्ट 50 years और द फर्स्ट 5 decades, दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक, और उसमें दो वाक़यात ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनका जो सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट है ऑन लिटरेचर, यू कैन नॉट रियली इग्नोर दैट. एंड व्हाट वाज दैट? 2 world wars from 1930 to 1918 and once again from 1939 to 1945. So that is why these first 50 years, first 5 decades of the 20th century, they were very crucial in human history. और जब आप स्पेसिफिकली मॉडर्निज़म की बात करते हैं एज ए लिटरेरी मूवमेंट, तो चूँकि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन थे सोसाइटी के अंदर, ओवरऑल जो ग्लोबल इन्वायरमेंट था उसके अंदर, तो हमें एक से ज़ायद मूवमेंट साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलते हुए एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई देती हैं. So when we talk about modernism, so it was also having some associated movements. Either these movements were diverting their ways or they were trying to merge themselves in the mainstream movement that was modernism, like Acme's poetry in Russia, and then again futurism in Italy, and again cubism that was also becoming the part of modernism. So these associated movements were having their own contribution. They have either made modernism more complex or more colorful. Surrealism, for that matter, that is another technique of writing, which is once again the part and parcel of modernism, and then once again expressionism. So these sub movements, side movements, or offshoots of modernism, they cannot be ignored because they are having their own impact, and they have provided the writers
ए टाइप ऑफ वैरायटी। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र करते आए हैं कि जो वैरायटी होती है राइटिंग के अंदर, दैट इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंबलिज़म की बात करते हैं, आप नेचुरलिज़म की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है हमने मज़ीद मूवमेंट्स को स्टडी किया और उसमें हम एक चीज़ पे फोकस करते आए हैं कि हर मूवमेंट जब कुछ अर्सा के लिए डेवलप होती है, देन ऑल ऑफ अ सडन, चूँकि ये सारा काम ग्लोबल लेवल पर हो रहा होता है, डिफरेंट राइटर्स आर राइटिंग हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, having different experiences, of course, having different economic and the social conditions back at home. So by taking inspiration from all these things, they would like to become more experimental. They would like to pursue a new dimension. They would like to bring new dynamics. So that is why, by remaining under the umbrella of modernism, there were various writers who are trying to give a sort of diversion to this major big movement. तो वो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ राइटिंग को बीच में लेकर आते रहे, जैसे हमने सरियलिज्म का जिक्र किया, एक्सप्रेशनिज्म का जिक्र किया, कल हम इमेजिज्म के मतलब पढ़ रहे थे। सो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं कलेक्टिवली किसी भी मूवमेंट को डेवलप करने के अंदर अपना जो रोल होता है उसको प्ले करती हैं, ठीक है। और ये जो लिटरेरी मॉडर्निज्म है, ये राइटर को खुद को एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्रेस करने में हेल्प आउट करता है। I mean, why we actually call it modernism? Because it was a break from past. Whatever writers were doing in the past, these writers were trying their best to do something new. Okay, what was happening in past? Let's try to have a glimpse upon that. They were before modernism, the writers were more conventional, more orthodox, more traditional in their approach, more indigenous in their approach. They were having linear plots, well merged plots. They were having certain parameters to follow. But on the other hand, when we try to talk about modernism or the modern writers, they often contain non-linear narratives and free-flowing interior monologues. ठीक है, और ये एक इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जब हम कहते हैं फ्री फ्लोइंग इंटीरियर मोनोलॉग्स. सो व्हाई देयर वाज एनी नीड फॉर इंटीरियर मोनोलॉग्स? बिकॉज दिस एज was an age of individualism. People were trying to become more isolated from the society. You can say it was the impact of war or the impact of world wars. People were becoming more introvert. So वो जो एक gregarious instinct थी लोगों में before the wars, now that is coming to an end. And people were taking interest in their individual lives. So similarly, the writers were trying to introduce new techniques by highlighting these individuals. They want to discuss the problems of the individuals, individual versus society, man versus God, man versus cosmic order, man versus society. So one single human being, it was separated from the rest of the people, and then he was flashlight, he was highlighted, so that the rest of the people may be able to understand his problems. ठीक है, तो जो फ़र्द के इमोशंस थे, जो किसी फ़र्द के तजुर्बात थे, बहुत ज़्यादा जो फोकस था मॉडर्निज़म के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर था. इससे पहले की बात की जाती थी इंडिविजुअल की, लेकिन इंडिविजुअल को सोसाइटी का हिस्सा मान के बात की जाती थी. As individual is supposed to be the basic unit of the society, there is no doubt about that.
So previously, the problem of a man was a problem of the society. The individual used to become the symbol of society. So if we were talking about the individual, ultimately we were talking about the society. But something new that happened during this age, it was this one point, that this individual, he was separated from the society. हम उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट को प्लेस करते हैं, हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू फोर्स द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स. सो दिस वाज ऑल टुगेदर ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लिटरेचर, टुवर्ड्स राइटिंग. सो जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, दैट व्हाट इज़ मॉडर्निज्म एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मूवमेंट्स और फ्रॉम पास्ट, ऑफ कोर्स. So when we say that modernism is a break from past, so what type of break it really was? It was break from the techniques of past, the traditions of past, the behavior of past, the overall temperament of past. And it was altogether a new type of thing. So modernism is a catch-all term for the numerous artistic and the cultural movements of the late 19th and the earlier 20th centuries. अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट, मीन वी नीड टू ड्रॉ अ वेरी फाइन, वेरी सटल लाइन बिटवीन मॉडर्निज्म एंड मॉडर्न एज. ठीक है, ये नुक्ता जो है ना, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मॉडर्निज्म एज ए मूवमेंट and modern age, these are two different things. You need to create a distinction between these two things. Modern age basically क्या थे? अगर आप इंसानी तारीख़ का मुतालिया करते हैं, if we try to talk about the history of the human civilization, तो हर एक दौर माजी के अंदर, इवन अगर आप रिमोट पास्ट की बात करते हैं, एंशियंट एजेस की बात करते हैं, प्रिमिटिव एजेस की बात करते हैं, तो हर दौर अपने से पहले दौर से ज़्यादा मॉडर्न था, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा डेवलप था. आप मिडीवियल एज को कंपेयर करते हैं ग्रीक एरा के साथ, रोमन एम्पायर के साथ, प्रशियन एम्पायर के साथ, इजिप्शियन एम्पायर के साथ, तो जो मिडीवियल एज थी, इट वाज मच मोर मॉडर्नाइज्ड, it was much more developed, it was much more progressed. तो वैसे हम मिडीवियल एज को डार्क एज कहते हैं, लेकिन वो डार्क एज हम उसको इसलिए कहते हैं कि जब हम आज के इस दौर में खड़े होकर पीछे मुड़ के देखते हैं, because today's world is much more advanced. So medieval age become a dark age just because of the fact that we are trying to analyze medieval age by having Renaissance in our mind, because the age of Renaissance was more advanced as compared to the medieval age. ठीक है, आप रेनेसांस से आगे निकलते हैं, प्यूरिटन एज की तरफ चले जाते हैं, प्यूरिटन से निकलते हैं आप जो है वो चले जाते हैं विक्टोरियन एज की तरफ चले जाते हैं. ये तमाम की तमाम एजेस अपने से प्रीवियस एजेस की निस्बत ज़्यादा मॉडर्नाइज थी. So modern age, it does not really mean that we are talking about 21st century or we are talking about the 20th century. तो जैसे मैंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में आपको हर गुज़रने वाली जो एज होती है वो कंपैरेटिवली लेस एडवांस नज़र आती है, और उससे आगे वाली जो एज होती है ये आपको कंपैरेटिवली मोर एडवांस नज़र आती है. तो हर एज अपने से पहली एज से ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है. ठीक है, आई होप सो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर पाया हूँ. ठीक है, तो मिडीवियल एज एक बैकवर्ड एज के तौर पे जानी जाती है बिकॉज ऑफ द बिगनिंग ऑफ द रेनेसां. रेनेसां वाज हैविंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स.
It was having its own loopholes. It was having its own backwardness. And then came another age. It will be more advanced, more scientific, more logical, more realistic, more pragmatic. ठीक है, तो जो मॉडर्निज्म है, आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्निज्म एक ओवरऑल चेंज इन बिहेवियर है, चेंज इन द थिंकिंग, चेंज इन द माइंड. सो मॉडर्निज्म एक ज़्यादा आप कह सकते हैं कि heterogeneous sort of term है, and it covers so many things. Your thought process, your approach to life, your approach to society, your approach towards religion. So ये एक collective term के दौर के ऊपर हम इसको ले सकते हैं, comparing to modern age. Fine. So this is important to make it clear here from the very start of our lecture. आप मॉडर्न एज को और मॉडर्निज्म को आपस में कंफ्यूज ना करें. जो रूट्स हैं मॉडर्निज्म की, आम तौर पे हम जर्मन फिलासफर इमैनुअल कैंट, हम उसका जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, हम इसे उसके साथ जोड़ते हैं, दैट इट हैज़ टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. और इमैनुअल कैंट जो है, he is the one who has given greater contribution in this regard. जब हम लेक्चर की नेक्स्ट फेज़ की तरफ बढ़ते हैं और मॉडर्निज्म या जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर था, इसके जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं कि हम किस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे बिटवीन मॉडर्निज्म एंड ऑफ कोर्स व्हाट वाज हैपनिंग इन पास्ट, और हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पास्ट. तो वो नेचुरली हम इसके जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं, जब उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वी विल बी इन ए गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है, तो ये ऊपर जिक्र हो गया इस बात का कि ये एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी, एक इनोवेटिव अप्रोच थी टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ मैन एंड सोसाइटी. और इसके मेजर करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की. ठीक है, हर नई एज, नई मूवमेंट जो होती है, नो डाउट कि उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ जो इनोवेटिव है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ द मूवमेंट्स और फ्राम द मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉडर्निस्ट लिटरेचर, तो स्पेसिफिकली अगर आप इसकी बात करेंगे तो इन्होंने जो टेक्निक्स ऑफ राइटिंग थी, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया. वो जो एक कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग था, ये चीज़ें उससे इंटायरली डिफरेंट थी. अच्छा, किस तरह से डिफरेंट थी? इन्होंने क्या ऐसा किया था कि यहाँ पे हमें चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं, because they blended imagery and themes, absurdism, non-linear narratives and stream of consciousness. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टर्म आपने सुनी, हम इसको फर्दर इलेबोरेट भी करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ आवर लेक्चर. ये एक फ्री फ्लोइंग इनर मोनोलॉग है. स्टूडेंट्स जो इससे पहले वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट नावल है मिसेस डैलोवे, अगर आप उसको स्टडी कर चुके हैं तो आपको जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके मतलब आइडिया होगा. मैं डिफ़ाइन करता चलूँ इसको यहीं पे, ताकि हम बड़ा इजी हो गया आगे की तरफ बढ़ते जाएं. देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है. हमारा जो माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, इट इज़ नॉट हैविंग लाइनियर मूवमेंट, that it is moving in a very straight way. No, it moves like a pendulum. It does not stay on one single point. It is moving backward, forward, right in the middle, moving backward, forward, right in the middle.
और ये जो मूवमेंट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की, ये मूवमेंट जो है ये भी आपको डिसिप्लिन नज़र नहीं आती है, रैंडम नज़र आएगी। ठीक है, सो दिस मूवमेंट इज़ नॉट फ्रॉम फ्रॉम फ्यूचर टू पास्ट और फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर. It may be from past to middle or present, from present to past again, and from past to future again. So it is having random kind of movement. आप सब क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ मुझे सुन रहे होंगे, तवज्जो से सुन रहे होंगे, कुछ मेंटली एब्सेंट भी होंगे यहाँ पर. फिजिकली ऑफ कोर्स यू आर हियर, बट मेंटली यू मे बी समवेयर एल्स, थिंकिंग अबाउट द मॉर्निंग, how you got up, what truly happened during the breakfast, or some may be thinking about the dinner, that what they will do after going back to their homes. तो ह्यूमन माइंड जो होता है ये रेंडमली मूव कर रहा होता है, ये एक लाइन के अंदर मूव नहीं करता. तो ये जो टेक्निक थी राइटिंग की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इस स्टेट ऑफ माइंड को लेके चलती है. दैट इज़ वाई मीन दीज टाइप ऑफ राइटिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई मीन सच नॉवेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स. आप मिसेस डैलोवे को पढ़ते हैं, ठीक है, ये 24 आवर के अंदर इस नावल को जो है वो उसका जो स्पैन ऑफ टाइम है, इट इज़ बेस्ड ऑन 24 आवर्स, एंड इट्स नॉट अ वेरी prolonged type of novel. It's comparatively short novel. But still you need to exert your intellectual power to understand what is actually happening in the novel, because it is not having a linear plot. It covers a day in the life of a female called Mrs. Dalloway, and in the span of 24 hours we, the reader, come to know about the overall history and overall life sketch of Mrs. Dalloway. We come to know about her university life, we come to know about her love affairs in her young age, her married life, and the company she is going to entertain at night. तो ये 24 आवर का ये जो स्पैन ऑफ टाइम है, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इसके अंदर हम किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी की एक पेन पिक्चर बना लेते हैं. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग दिस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो ये आपके माइंड का एक इनर मोनोलॉग है, द इंडिविजुअल टॉकिंग टू हिमसेल्फ. फिर से इंडिविजुअलिज्म को आप बीच में देख सकते हैं. वन सिंगल इंडिविजुअल up against the society, thinking about his own problem. He has cut himself from the society, an isolated man. In spite of the fact that he is a part of this cosmic order, he is a part of this society, still he is isolated, he is different, he is very much involved in his own thoughts. So isolation, of course, this is another aspect of modernism. The problems of the individuals are highlighted. ठीक है, तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिससे हमें ये पता चलता है हाउ द कैरेक्टर्स आर थिंकिंग. ये जो थॉट प्रोसेस है, नो डाउट इट इज़ ऑलवेज इनकन्सिस्टेंट, इट इज़ रैंडम, chaotic, illogical. ठीक है, और राइटर के लिए ये चीज़ इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये टेक्निक इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उसे अपना जो स्किल ऑफ राइटिंग है उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है. ही विल ट्राई टू टेक वन प्रोटैगनिस्ट, वन हीरो, इट मे बी अ विलन, अ बैड मैन, एंड देन ही ट्राइज टू एनालाइज द स्ट्रीम ऑफ हिज माइंड, व्हाट यू कैन कॉल द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर आप मेजर राइटर्स की इस हवाले से बात करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ का जिक्र हमने कर दिया, जेम्स जॉइस, टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड ऑफ कोर्स. सो दीज आर मेजर राइटर्स, दे हैव यूज्ड दिस टेक्निक इन देयर राइटिंग.
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, वैसे तो इसका जिक्र ऊपर हो गया, लेकिन ये पॉइंट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट जब आप इसको मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने बताया, दोबारा से हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर इंडिविजुअल जो है इट इज़ हैविंग वेरी वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज सोसाइटी एज ए होल, वी आर गोइंग टू एनालाइज इंडिविजुअल हु इज़ ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। सो द कैरेक्टर्स आर देयर, how they are trying to adapt themselves to the changing world. Adaptation is a very important process for the individuals. कल हमने नेचुरलिज्म के अंदर इसका काफ़ी जिक्र किया, और हम देखते हैं that how one single individual is trying to deal with difficult circumstances and the challenges. मैं जब भी इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा होता हूँ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरे जहन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो अमेरिकन ड्रामाटिस्ट था आर्थर मिलर, उसका ड्रामा था द डेथ ऑफ द सेल्समैन, डेथ ऑफ द सेल्समैन। उसमें एक करेक्टर था विली लोमैन का, ही वॉज अ सेल्समैन ऑफ कोर्स। सो दैट पर्टिकुलर करेक्टर, द करेक्टर ऑफ विली लोमैन, ही इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ हैविंग personal problems related to his personality, problems related to his family, problems related to his conjugal life, marital life, problem related to his business, problems related to his own failure, and problems related to his aspiration about his sons and his own personal life, and how he is becoming a thorough failure when he is up against the social circumstances, when he is up against the society, when he is up against the crowd of the people. So individualism is one of the hallmark of मॉडर्निज्म। ठीक है, यहाँ पे हम एक टिपिकल प्रोटैगनिस्ट को पिक करते हैं और हम ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं दैट हाउ ही इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू सर्वाइव इन दिस हॉस्टाइल सोसाइटी, हाउ ही इज़ ट्राइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजिंग वर्ल्ड, एंड हाउ सोसाइटी इज़ ट्राइंग टू पोज डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ दिस प्रोटैगनिस्ट। Now whether he will be able to survive or the society is going to fail him. Similarly, you can find compelling example of individualism in the works of Ernest Hemingway, the Papa in the world of literature. ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्निज्म के अंदर हमें जो सब्जेक्टिव रियलिटी थी, इंडिविजुअल रियलिटी थी, द राइटर सीम्स टू बी ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, द सब्जेक्टिव रियलिटी, द इंडिविजुअल रियलिटी, हाउ वन सिंगल इंडिविजुअल इज थिंकिंग इन द सोसाइटी, a society that is based upon hundreds and thousands of people. The writer will try to pick one single individual from that complex, complicated society, and he will try to analyze the inner workings of his mind. So it becomes a very interesting study overall, that how one single individual is fighting, the fight of the individual, his fight to survive when the society is not allowing him to survive, and how he is making efforts to survive, how he is making efforts to fight. So that fight of an individual against the society is the most interesting aspect of modernism. You cannot quote better example than Franz Kafka's novel. Look how his characters are isolated. Try to read his short story Penal Colony. Try to read his novel Castle. Try to analyze the life of the land surveyor in the castle. And then again K, very important character in the trial. That how one single individual is isolated by the force of the society, by the institution of the state, and how he is making efforts, fighting really hard to make his way forward, to assert his identity when the society is ready to eliminate his identity, and he is trying to make his individualism
as a benchmark in the society. So this is one of the most important aspect when we talk about modernism. ठीक है, फर्दर आप बढ़ते हैं आगे की तरफ तो हम देखते हैं कि जो मॉडर्निस्ट राइटर थे या मॉडर्निज्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इनकी टेक्निक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो जो राइटर्स थे दे बिलीव इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, नो डाउट कि वहाँ पे इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, लेकिन इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स के पीछे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे दे वर मल्टीपल. जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. आप इंडिविजुअल को लेते हैं, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के अंदर आप उसको लिखते हैं. आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को ले लेते हैं, आप उनकी जो सब्जेक्टिविटी है आप उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. So a novel that is having more than one characters, all these characters, they are having individuality, they are having their own subjectivity, they are having their own social status, they are having their own upbringing, they are having their own genetics, and of course they are having their own environment. So automatically, because of these varieties, because of these perspectives, one individual becomes unique as compared to the rest of the individuals. So society is full of variety of the individuals, and all those individuals collectively or individually, they are having different but various problems. पोइट्री स्पेसिफिक होकर हम बात करते हैं तो फ्री वर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. तो वो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री था, इट वाज रिजेक्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, एंड राइटर्स दे ऑप्टेड फॉर फ्री वर्स. ठीक है, नो डाउट कि फ्री वर्स में राइम स्कीम, मेट्रिकल पैटर्न, म्यूजिकल फॉर्म, ये चीज़ तो नहीं होती थी बिकॉज इट वाज फ्री वर्स. लेकिन जिस तरह की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, जिस तरह के प्रॉब्लम सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, आप उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक रिदमिक फॉर्म के अंदर मीट्रिकल पैटर्न के साथ प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट मेक दीज प्रॉब्लम्स मैकेनिकल. You cannot make anything mechanical that is already is complex and difficult. So you need to bring some ease and comfort in the way of your expression so that you will be able to present something complex in a very easy way, in a very comfortable way, so that the reader, he may be able to understand these problems with utmost ease and comfort. तो फ्री वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया इस एज के अंदर, जिससे रीडर को ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है चीज़ों को बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड करने के हवाले से. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एब्सर्डिटी की तरफ. तो जैसे हम इंडिविजुअलिज्म को पढ़ते आ रहे हैं, हम बात करते आ रहे हैं, जब आप इंडिविजुअल को सोसाइटी के सामने रखते हैं एंड यू ट्राई टू चेक द पावर and vigor of the individual, that how he will be able to fight against the society or the rest of the individuals. So the end result is absurdity, isolation, rejection, sadness, somber attitude, pensive mood. Economic crisis already थे, वर्ल्ड वार का जिक्र हम कर चुके हैं. It was the rise of the capitalism, rich were becoming rich and the poor were becoming marginalized. The different cultures of the world, they were colliding with each other, and the dominant cultures, they were trying to eliminate the minor cultures. तो ये सोसाइटी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, और जो एंड रिजल्ट निकल रहा था किसी भी इंडिविजुअल के लिए, when he was living in such type of hostile world, the end result, it was full of absurdism, it was full of absurdity. तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एब्सर्डिटी का मॉडर्निज्म के हवाले से. When the society is not having a proper scheme to follow,
and individuals are left of their own. So automatically the work of art will try to bring bizarre element, nonsensical elements. You will find surrealism, you will find fantastical turns of the writers. You will try to find haphazard movements, unexpected turns, twist in the work of the art. So this was also the age of the rise of absurdism. और absurdism को अगर further हम elaborate करते हैं, so ultimately it will take us to the theatre of the absurd, pioneered by the European playwrights, and it revolves around the idea that the human existence has no grand purpose or meaning. The absurdist plays do not seek to communicate effectively, instead they include irrational speech. ठीक है, अच्छा यानी कि रैशनल अप्रोच तो आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते हैं when the overall scheme of the universe is irrational, when there is no system, when there is no logic, and when you are having problems all around. So automatically absurdity is bound to come up. There is no better example of absurdity in literary modernism than Franz Kafka's work, especially the Metamorphosis. काफका का जिक्र ऊपर भी हमने किया, ट्रायल के हवाले से, कासल के हवाले से. ठीक है, अगर आप मेटामॉर्फोसिस को पढ़ते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली दी हाइप ऑफ एब्सर्डिज्म. तो इस एज में हम जो राइज ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, हम उसको भी देखते हैं. अल्बर्ट काम्यू को आप देखते हैं, आप काफका को देखते हैं, मिलान कुंडेरा को देखते हैं. इस तरह से आप और बहुत से ऐसे राइटर्स, हैरल्ड पिंटर को आप देखते हैं, आयरिश राइटर है. सैमुअल बेकेट को आप देखते हैं, वेटिंग फॉर गोडो, वेरी फेमस प्ले. तो ये तमाम के तमाम जो राइटर्स हैं. अच्छा, फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये तमाम के तमाम राइटर्स, इनमें से कुछ जो हैं वो बिलोंग करते हैं आयरलैंड से, बट दे ऑल सेंटर अराउंड फ्रांस. सो वंस अगेन फ्रांस इज़ बिकमिंग द सेंटर ऑफ ऑल थिंग, द सेंटर ऑफ एक्टिविटी. So Pinter was also living in France. So was the case with Samuel Beckett. So he was also living in France, writing their plays in the French language. So whatever is happening in the 19th or the 20th century, it is actually happening in France. So creativity का जो एक level हमें नज़र आता है फ्रांस के अंदर, so this country is becoming very important in this regard. Every single movement is getting its vigor from France, from Paris. Further हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. कल इस पे हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी सिम्बोलिज़म. यहाँ पे हम सिम्बोलिज़म को एक वन आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निज़म के तौर पे देखेंगे. ठीक है, कि जो राइटर्स थे किस तरह से वो सिम्बोलिज़म को या इस टेक्निक ऑफ सिम्बोलिज़म को यूटिलाइज़ करते थे ताकि वो अपने जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा आर्टिकुलेटेड वे के अंदर डिफ़ाइन कर सकें, कन्वे कर सकें टू द रीडर्स. सिम्बोलिज़म जो है ये हमें 19th सेंचुरी में भी नज़र आता है, लेकिन जब आप इसको 20th सेंचुरी के हवाले से इसको देखते हैं, आप इसको मॉडर्निज़म के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो तब राइटर्स ने, पोइट्स ने इसको थोड़ा सा री इमेजिन किया सिम्बोलिज़म को. इससे पहले जो राइटर्स थे, दोज हु आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ सिम्बोलिज़म, दे लेफ्ट लिटिल अनसेड. मीन दे यूज टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग. मीन कि उनकी सिम्बल्स ज़्यादा आर्टिकुलेटेड थी, ज़्यादा डेफिनेट थी, ज़्यादा अपर्ट थी. लेकिन जो मॉडर्निस्ट थे उन्होंने चूँकि इसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया, रीअलाइन किया अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स. So they prefer to leave plenty of blanks for the reader's imaginations to fill. इनकी symbols जो थी definite नहीं थी, indefinite थी, confusing थी, articulated नहीं थी, and these symbols were open to multiple interpretation.
So these were not regular conventional symbols, rather these were irregular non-conventional symbols. So this was one of the changes that these writers they tried to introduce in the modern age, कि सिंबलिज्म को या इस टेक्निक को भी काफ़ी हद तक उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस। हमें सिंबलिज्म का सबसे ज़्यादा यूज़ मॉडर्न एज में टी.एस. एलियट के वर्क ऑफ आर्ट्स में नज़र आता है, जेम्स जॉयस में नज़र आता है, ठीक है। और दोनों जो राइटर्स हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स हैं ऑफ कोर्स, इनकी जो सिंबल्स थी ये कंफ्यूज्ड सिंबल थी, और जो रीडर है वो साइमल्टेनियसली जितनी भी पॉसिबल उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती थी, क्योंकि सेवरल इंटरप्रिटेशंस होती थी, वो दे सकता था। सो जैसे बात अभी हुई कि ये रेगुलर या कन्वेंशनल सिंबल्स नहीं थी कि आप इजीली आप उसका जो मीनिंग है उसको आप डिराइव कर सकें। दिस वर नॉन कन्वेंशनल, सो दैट इज़ वाई इट वाज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीडर that he can interpret and decipher these symbols in his own way. Then next is formalism. In the modern period literature, the writing process was no longer perceived as a laborious craft. Modernists treated it as creative process instead. In some cases, the originality of the form was deemed more important than the substance. तो आर्ट ऑफ राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस था, कंटेंट पॉसिबली थोड़ा सा बैकग्राउंड में था। सो जो टेक्निक ऑफ राइटिंग थी, राइटर उसके मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल थे। दे वांट टू डू समथिंग न्यू एज फार एज देयर टेक्निक्स वर कंसर्न। आप ई कॉमिक्स को देख लें, ठीक है, आप उसकी पोइट्री को, उसके वर्ड्स को, उसकी फ्रेजेस को, उसकी पोएम को, उसके पेंट को देखें, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें थी ये फॉर्मलिज्म की तरफ हमें लेकर जा रही थी, ठीक है, चूँकि नॉन कन्वेंशनल एटीट्यूड था। सो दैट इज़ वाई दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू ब्रिंग समथिंग न्यू। दे इन्वेंटेड न्यू फ्रेजेस, दे इन्वेंटेड अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स, दे इन्वेंटेड फॉरेन वर्ड्स। सो दे वर मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स इवन विद द लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम आम तौर के ऊपर देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मॉडर्निज़म के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज़ ऑफ लेक्चर है उसके अंदर हम जो मेजर थीम्स हैं, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग फेज़ रहेगी इस लेक्चर के हवाले से, कि इतनी कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल एज के अंदर व्हेन यू आर हैविंग टू बिग वर्ल्ड वार्स, तो मेजर थीम्स किसी भी राइटर के, किसी भी आर्टिस्ट के क्या हो सकते हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड दीज मेजर थीम्स। मेजर थीम में हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। एज मॉडर्निज्म इट वाज सपोज्ड टू बी अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, इट वाज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, वेदर राइटिंग, टेक्निक्स, स्किल, थीम्स, characteristics. So you can find this change, this transformation in all aspects of life and writing and literature and creativity. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ जिस पर हम फोकस कर सकते हैं वो एक रेडिकल चेंज था। ये राइटर के माइंड के अंदर ये चीज़ फिक्स थी that he need to do something that is radically different from the past. ठीक है, the theme of transformation, change in belief, opinions, identities, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ट्रांसफॉर्म होते हुए, चेंज होते हुए देखते हैं। एक सिंबॉलिक रीबर्थ हम देखते हैं। वो रीबर्थ क्या थी? फ्यूल्ड बाय लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड द वार एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑथर्स। तो चूँकि जो इम्पैक्ट ऑफ वार है, इट हैज़ फ्रेगमेंटेड द सोसाइटी, इट हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी, इट हैज़ चेंज द सोसाइटी फ्रॉम ए सोसाइटी टू इंडिविजुअल्स। तो इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमें
चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई नज़र आती हैं, वो हमें कलेक्टिव फॉर्म के अंदर नज़र नहीं आती. एंड यू कैन ईजिली फाइंड दिस एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज ए थीम इन फ्रांस काफ्का's absurdist the metamorphosis, जिसका जिक्र हम ऊपर कर रहे हैं. Now look towards that transformation. A man is becoming bug. So when we talk about the American literature with reference to transformation, of course, so you can identify this theme in the works of Ernest Hemingway and William Faulkner. तो हेमिंगवे चूँकि खुद बहुत एक्टिव रहा वर्ल्ड वार के हवाले से, प्रैक्टिकली ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दैट. So you can find annihilation, destruction, murder, bloodshed in his short stories, in his novels. So these are his major themes. If we talk about his novel, The Sun Also Rises, For Whom the Bell Tolls. So you can find these themes of destruction and war. Then again, William Faulkner, Barn Burning, अगर आप उसके नावल का जिक्र करते हैं. So these themes are projected and talked about and analyzed even in America. नेक्स्ट पॉइंट या जो नेक्स्ट थीम हो सकता है इस हवाले से कि किस तरह से जो मिथोलॉजिकल टेल्स थी, हाउ दे वर यूटिलाइज्ड बाय दीज राइटर्स इन द वर्क ऑफ आर्ट. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस हवाले से रहेगा कि चूँकि हम मॉडर्निज़म को लेते हैं अब ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, तो जब आप मिथ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू टेक इन्फ्लुएंस फ्रॉम पास्ट. तो यहाँ पे वो जो टी.एस. एलियट का पॉइंट था ना, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के हवाले से, वो बात आई कि हमेशा जो इंडिविजुअल टैलेंट है ये ट्रेडिशन को यूज़ करता है, और ट्रेडिशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल टैलेंट को स्पेस दे. तो हमारा सारे के सारा आज का जो लेक्चर था वो इस बात के ऊपर फोकस कर रहा था कि किस तरह से जो मॉडर्निस्ट थे, दे सिंपली वांट टू डिविएट फ्रॉम पास्ट. बट हेयर आई मीन यू कैन फाइंड वन सिंगल पॉइंट दैट द वे आई मीन दे वर ट्राइंग टू recourse to past by bringing or introducing mythological tales in their writing. So this point will be very interesting point. अच्छा, अब इन मिथ्स को इन राइटर्स ने I mean in a very clever way they reinvented, they remodified according to the modern trends. ठीक है, वो मिथ्स को लेते तो थे लेकिन उनको फिर री इमेजिन कर लेते थे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. ठीक है, तो वो पास से रिकोर्स तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे वर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन ए न्यू वे. ठीक है, आप टी.एस. एलियट की वेस्टर्न को पढ़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके मैग्नम ओपस के तौर पे आप इसको लेते हैं. सो यू कैन फाइंड एग्जांपल्स ऑफ मिथ्स इन द वेस्ट एंड, बट आई मीन ही हैज़ री इमेजिन दीज मिथ्स, स्पेशली द मिथ ऑफ द फिशर किंग. सो आप लैटिन ग्रीक रेफरेंसेस को बीच में लेकर तो आते हैं, लेकिन आप उनको री इमेजिन कर लेते हैं, आप उनको एक न्यू फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर जेम्स जॉयस की यूलिसिस को आप देख लें. ठीक है, तो यूलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज पिक्ड फ्रॉम होमर्स ओडेसियस. आप अमेरिकन राइटर यूजीन ओनाइल की बात करते हैं, आप उसके नावल की बात करते हैं मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं, आप ग्रीक मिथ जो है इलेक्ट्रा की, आप उसका जिक्र देखते हैं. तो मिथ्स का जिक्र आपको आ रहा है नज़र यहाँ पर, भले वो फिशर किंग की है, वो यूलिसिस की है, वो इलेक्ट्रा की है, बट दे वर यूजिंग दीज थिंग्स इन ए मॉडिफाइड फॉर्म. दे वर ट्राइंग टू चेंज दीज मिथ्स according to the modern what you can say modern needs. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि मिथ्स तो आपको नज़र आती हैं लेकिन आपको मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर नज़र आती हैं. देन अगेन आई मीन द थीम ऑफ लॉस, सेपरेशन, आइसोलेशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज थीम्स वर पॉसिबल इन मॉडर्न लिटरेचर ओनली बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार्स.
So behind these cruel experiences of war are the major reasons this theme became prevalent in modern period literature. These experiences were infused with loss, separation, destruction, and many authors lived through them. So these experiences were reflected in the works of the post-war times. Hemingway का जिक्र हमने किया. He himself was, the victim of World War. So you can find the impact of war in his writing. ठीक है, separation, universal experiences, destruction, loss, murder, bloodshed, inconsistencies in behavior, selfishness. All these things, they are supposed to be the hallmark of modern literature. तो ये मेजर थीम्स के तौर पे आप इन सारी चीज़ों को बीच में ले सकते हैं. ठीक है, आप वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ लें, आप फॉकनर को पढ़ लें, एलियट को पढ़ लें, हेमिंगवे को पढ़ लें. सो देयर वर्क ऑफ आर्ट, they were replete with war experiences. ठीक है, और अगर आप वार लिटरेचर को एक जॉनरा के तौर पर लेते हैं तो आपको बहुत से राइटर इस एज में से नज़र आएंगे. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ह्यूमन इमोशंस के हवाले से बात करते हैं कि इतनी हॉस्टाइल सोसाइटी के अंदर when everything is moving towards its destruction, what was the place of emotion, sentiments, love, sensuality? So it will be interesting point that how people were behaving towards their sentiments, how individual was trying to formulate his or her relation with another individual, because it was an age of distrust. But still you can find the quest of man to love in an age when people were selfish. इस एज में हम लव की वो डेफिनेशन या वो प्रोजेक्शन तो नहीं देख सकते जिस तरह हम पेट्रार्कल लिटरेचर के अंदर देखते हैं. ठीक है, आई मीन वी आर नॉट हैविंग ए वेरी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लव ड्यूरिंग दिस एज. और हम लव को लेकर जो हमारा एक एक कन्वेंशनल स्टांस हो सकता है, दैट लव इज़ अ काइंड ऑफ मैजिकल फीलिंग. It can move the heavens and the earths and the mountains. So ऐसी वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, बल्कि हमें लव की तरफ जो लोगों की अप्रोच है वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक नज़र आती है. Because of their bad war experiences, they have understood life in a far better way. So that is why they were no more sentimental. They were self-centered. So love stories, they were more grim type of stories, fatalistic type of stories. So you cannot find Romeo Juliets in this literature. Yes, you can find timely relations, one night stands, extramarital relations, selfishness, individualism, shallow emotions, fickle emotions, but no more deep love or deep feelings related to love. So love was treated more cynically, more realistically, and more practically during this age. ठीक है, सेंसुअलिटी जो था ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था इस एज के हवाले से. ठीक है, आप डी एच लॉरेंस के नावल को देखते हैं, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ते हैं, तो हमें सेंसुअलिटी का एक जो एलिमेंट है या सेक्सुअलिटी का जो एक एलिमेंट है वो भी प्रीडोमिनेंटली नज़र आता है. कि जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूमन इमोशंस थे, दे वर फिकल, दे वर सेल्फ सेंटर्ड. सो men were using men, they were using them for their own purpose, for their own selfish gains. So that deep rooted love that was absent during this age. We were having gender roles, defined gender roles, and every single individual he was trying to focus upon himself. तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा. इवन इन द अमेरिकन लिटरेचर, यू कैन स्टडी द ग्रेट गैट्सबी, वेरी इंपॉर्टेंट नावल ऑफ कोर्स. So you can find the element of sensuality, you can find the element of sensuality for Whom the Bell Tolls by Hemingway.
Lady Chatterley's Lover by D.H. Lawrence. So these are good examples that can prove this point that love was no more sentimental. It was just one aspect of life and you can use it for your own purpose. So it was more, fickle, more shallow in its projection. So these were actually the major themes. हमने जितना मुमकिन था एक लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की है. ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ राइटर्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट राइटर्स हो सकते हैं मॉडर्निज़म के हवाले से. उनकी हिंट्स मैं देता चलूँगा आपको, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं. बाकी फर्दर आप इनको गूगल आउट कर सकते हैं और आप अपने नोट्स वगैरह या जो है उनको आप अपने जो हैंड आउट्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो जी मूव करते हैं जी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के हवाले से, जो नोटेबल राइटर्स हैं, उनके वर्क ऑफ आर्ट के मुतल्लिक थोड़ा सा जिक्र करते चलें. वर्जीनिया वुल्फ का बहुत जिक्र हो गया ऊपर. ठीक है, आप खुद भी इसको थोड़ा सा गूगल आउट कीजिएगा. ट्राई टू फाइंड आउट हर फेमिनिस्ट थीम्स, हर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, because she is the one who was taking impression from Simone de Beauvoir, the French writer. ठीक है, हर बुक इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द फीमेल्स. द सेकंड सेक्स का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पर. उसके बाद जेम्स चॉइस, द आयरिश राइटर. वर्जीनिया वुल्फ, शी इज़ आल्सो आयरिश राइटर. आयरलैंड इज़ वेरी रिच कंट्री एज फार एज लिटरेचर इज़ कंसर्न. इट हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी राइटर्स. So as far as the development of literature is concerned, Ireland is having a great role, great contribution in this regard. You can find really big writers from that country. James Joyce, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Harold Pinter, Bernard Shaw. Amazing collection and the galaxy of stars from Ireland. So, James Joyce, a portrait of an artist as a young man. You can quote that example. Stream of consciousness के अंदर बड़ी फिट एग्जाम्पल है. अमेरिकन राइटर्स की बात करें, गर्ट्रूड स्टेन. So you can talk about her, you can talk about her work of arts. And then again William Faulkner, इम्पॉर्टेंट राइटर है. इसका जिक्र हम करते आ रहे हैं जब से हमने इस लेक्चर्स को, इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर को हमने स्टार्ट किया है. तो वंस अगेन जो टेक्निक उसने यूज़ की फॉकनर ने, अनरिलायबल नरेटर है, नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग डिवाइसेस हैं, और वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स. हाँ, ये एक चीज़ नहीं हो सकती है फॉकनर के अंदर, दैट ही हैज़ यूज्ड हिज सदर्न गोथिक टेक्निक्स. So you can find a bit of supernaturalism. That's a bit queer. When we talk about the modern literature, so introducing Gothic elements, that is a bit unacceptable. But he has used this technique in his writing. तो उसका अगर आप The Sound and the Fury आप उसको पढ़ें, As I Lay Dying, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं. Then Ezra Pound, another very important poet, American poet, very important poet of the 20th century, modernism. He's famous for his free verse poetry, his illusions, his vivid description, his powerful description, his use of imagism. All these things make him such a wonderful writer to study. Franz Kafka, we have talked much about him. Kafka is a German-speaking writer, and he has taken very strong inspiration and impression from the World War. So the world of Kafka is a world of darkness, world of sorrow, world of surrealism. So Kafka is having the power and the magic to take you into the world of dreams. So it is very difficult that you are reading Kafka and you are not feeling yourself a dreamy person. It's very difficult to come out of the impact that this writer is going to create on your mind. He is always after your nerves. So to enjoy the complete Kafka experience, you need to study his castle, his trial. Absurdism, surrealism, fantastical elements, all these things can be found in the writing of Franz Kafka.
इनफैक्ट हम यूज़ करते हैं एक टर्म कैफकेस के हवाले से, ठीक है। और ये एक जो कंप्लीट स्टाइल ऑफ द ऑथर है, ये चीज़ उसको डिफ़ाइन करती है। काफ़का अपनी ज़ात के अंदर एक पूरी की पूरी फ़िलासफ़ी है, एक पूरी की पूरी टेक्निक ऑफ राइटिंग है। तो उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कैफकेस कहते हैं, द ओवरऑल फ़िलासफ़ी एंड द वे ऑफ राइटिंग ऑफ काफ़का। And he has inspired so many other writers like Milan Kundera. He has taken very strong inspiration from Franz Kafka. ई कमिक्स का जिक्र भी ऊपर हुआ, ठीक है। D.H. लॉरेंस का जिक्र जो है वो हुआ। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का जिक्र हुआ। ये सारे राइटर्स जो हैं इनको हम ऊपर पढ़ते आए हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड है, शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन राइटर, न्यूजीलैंड राइटर. So you can find anxiety, problem of identity, problem of existence. The philosophy of existentialism is also there. Sexuality, sensuality, these are major part of her creative writing. So this is what I mean we can say about modernism. ये एक hectic prolonged lecture रहा इस हवाले से. So I hope you must have learned something out of it. And do ask your questions in the comment section, in the comment box. This will help me to analyze my own lecture, my own weaknesses. So simply I want to learn from my student as well. So do ask questions related to modernism, and also suggest that how these lectures can be improved further. So this thing will help me to improve these lectures for the facility of the students. Thank you very much.